Hello class, I am Nikhilesh Mishra, your computer teacher. Class, in the previous video, chapter 5th, presentation in PowerPoint 2016, where we discuss about your office suit. Then after we discuss about PowerPoint. After that we discuss about creating a photo album, how we create a photo album step by step. So after that student adding a gradient to slide background. ग्रेडियंट का मतलब एक्चुअल में होता है ढाल. सो इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आप जब कोई स्लाइड बनाते हैं तो कलर का स्लोप आपको देखिएगा एक तरफ से मिलेगा. सो इसे कहते हैं ग्रेडियंट, जो कि हम अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. सो सिंपली जब हम लोग ओपन करते हैं, व्हेन वी ओपन द स्लाइड या प्रेजेंटेशन, सो हमको जो स्लाइड मिलती है कुछ इस तरीके से मिलती है. सो when we add a gradient to our slide, simply we open the PowerPoint 2016, then we click on design tab. After that go to format background, and the format background pane will be appear. So after that student, format background will be appear. So after that student, click on gradient fill, then click on the down arrow of preset gradient. A drop down list gradient pattern will appear. So simply we see that ये gradient के patterns हैं. और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ का कलर देखिए इस तरीके से है. सो दिस इज़ द ग्रेडियंट. सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश टाइप में है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपका येलो वाइट में है. सो दिस इज़ द ग्रेडियंट. सो हमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट स्टेप, ओपन योर PowerPoint 2016, देन सिंपली गो टू डिज़ाइन टैब, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड, एंड द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन विल बी अपीयर. आफ्टर दैट स्टूडेंट आपको क्या करना है, simply you click on gradient fill. So here the gradient list will appear. drop down arrow से आप preset कर सकते हैं gradient को, and then click on the pattern you want to apply, and the pattern will be applied to the slide like this. थोड़ा सा क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन जो भी आप पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, हियर वी सी द पैटर्न्स लाइक दिस. ये सब पैटर्न्स हैं. सो सिंपली दिस पैटर्न्स आर यूज्ड इन आवर स्लाइड, एंड देन क्लिक द डाउन एरो ऑफ टाइप. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर, एंड then click the type you want to apply the gradient background, and then click on the down arrow of direction. A drop down list of option will appear. Then you simply click on the direction of the gradient that you want for your slide, and the changes will made in your slide. And then simply click on apply to all. If you want to choose any gradient to your all slides, so simply आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई टू ऑल करना पड़ेगा. देन द ग्रेडियंट बैकग्राउंड विल अप्लाई टू द ऑल स्लाइड्स विच यू मेड अर्ली. सो दिस इज द ग्रेडियंट. एंड नाउ स्टूडेंट्स वी सी the gradient has changed our slide that we have made. So this is the gradient. After that students, different views in presentations. So different views in presentations, हम लोग क्या करते हैं, कई टाइप से presentations का व्यू हमारी स्लाइड में देखते हैं. So simply this feature of MS PowerPoint gives us a viewing presentation in our different formats such as your normal view, slide shorter view,
note page view, slideshow. So these are the views. By default, students, we work in normal view, and the view of a presentation can be changed anytime by clicking on the desired view option available in the presentation view group on the view tab. So students, first of all, while preparing on the presenting a presentation, it is required to view the presentation in different style at the different stages. PowerPoint 2016 gives 5 types of view, each suited for a particular purpose, मतलब as per our requirement. So first is your normal view, outline view, slide sorter view, note page view, and slideshow view. Students, all these views are available in presentation view, group of view tab, and also at the bottom right side of the status bar of your PowerPoint window 2016. So students, first of all we discuss about your normal view. So students, in normal view, this is the main editing view by which view which is used to write and design a presentation in normal view, and you can add text, graphics, sound, animation, and other effect. As well as in this view, you can also have a large view of individual slide, note pane at the bottom and outline of the slide text, and slide display as thumbnails, all at the same time. So in this view there are 3 parts. First is your, in normal view there are 3 main parts: slide navigation pane, slide pane, and note pane. So slide navigation pane, this is present on your left side of the normal view window. It is here so that you can view all the slide of your presentation as thumbnail while editing. This makes navigation through the slide easy to you, changes the design and formatting, etc. So you can also rearrange, add or delete the slide here through the normal view in slide navigation pane. After that, student, second is your second part of your normal view is that slide pane. Slide pane is on the upper right side of the PowerPoint window. It displays the current slide, enlarge and allow us to work on our slide. And third one is your note pane. So student, this pane is situated below the slide pane. Here you can add your notes related to current slide which can be referred while giving presentation, and student, these notes can also be printed. So in normal view we have 3 main parts. हमारे नॉर्मल व्यू में क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. स्लाइड नेविगेशन पेन जो कि आपका लेफ़्ट साइड के नॉर्मल व्यू के लेफ़्ट साइड में होता है अवेलेबल, एंड स्लाइड पेन अपर राइट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, एंड नोट पेन इज अवेलेबल ऑन द योर बिलो द स्लाइड पेन. सो हमने नॉर्मल व्यू के 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया. After that student, we discuss in next video, that is your outline view and slide sorter view, note page view and slideshow view. So these topics are discussed in our next videos. Thank you very much and take care.